कभी कभी यूट्यूब वीडियोस जो हम बनाते हैं वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती हैं, तो उन वीडियोस में अगर सेगमेंट्स या चैप्टर्स डाल दिए जाएँ तो उससे व्यूवर को बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है और वो स्किप कर सकता है जो पार्ट्स उसको नहीं चाहिए होते, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में हमने ये लिखा होता है कि कौन से चैप्टर में क्या डिटेल से बयान किया गया है। आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि यूट्यूब की वीडियो में आप सेगमेंट्स या चैप्टर्स कैसे डाल सकते हो। बिना आपका टाइम ज़ाया किए और सब्सक्राइब वगैरह वाली बातें की हुई जस्ट स्टार्ट करते हैं। कि आपको अपने अकाउंट में जाना है। ओके, आपके अकाउंट में जाके जो वीडियो है जिसमें आप सेगमेंट डालना चाहते हो, लाइक मेरी ये वीडियो है ग्लोबल विलेज का जो मैंने व्लॉग किया था, तो वो लंबी है, लाइक 6 मिनट की है। तो उसमें अगर मैं सेगमेंट्स डालना चाहता हूँ तो मैं जाऊँगा, इस वीडियो को ओपन करूँगा। ओपन करके देन आई विल एडिट द वीडियो। मैंने गो इन एडिट, in edit page, in description I need to write the segments. So like if I go here, most important thing for that is like you need to first put 00 colon 00, and then you need to put the first chapter, like let's say introduction. I'll put intro, then you need to put a space, and then on the other time codes, like whatever the thing is, like let's say I explained about America at 1 minute, so I will put like 01 and then colon 0. So at 1 minute I started explaining about America's pavilion. So this is how it will be. So you can add as much as you want in your video, just need to be sure like you don't cross the time code of the last second of video. Like my video is 6 seconds and 2 minutes 6 minutes and 2 seconds, so I should not skip, like I should not put like 6 minutes and 4 seconds, because there are nothing like that, but that's like a common sense thing. So now if I'm done, I will just save, and if I go and open my video on YouTube now and I click on my video, you see it's having the segments, it's having a segment. And if I go to the description now, like say let's say I go more, you can see that it's having intro and then it's having America. I hope आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि यार आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ही कर दो, बट एटलीस्ट एक लाइक तो बनता है ना। अगर आपकी इस वीडियो से हेल्प हुई है तो एटलीस्ट लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।